Hi everyone, this is Jenish Kota here from Wisdom Commerce Classes, and we are on page number 27. The name of the chapter, Leçon 1, Autour de la table, around the table. Apprenons, let us learn. Bon appétit. Bon appétit is it's greeting when you sit for lunch or dinner. You wish to other people happy meal. À table, at the table. So what is given with the yellow color are noun. So dîner, masculine noun, dinner. Entrée, starters, it's a feminine noun. Repas, masculine noun, meal. Aperitif, that is appetizer, it's a masculine noun. Appetizer means drink. Plat, plat is a masculine noun, dish. What is given with the blue color are the verbs. Goûter, to taste. Préparer, to prepare. Chauffer, to heat, गरम करना. Mettre le couvert is to lay the table. Lay the table का मतलब है arrange करना table को. It's an expression to arrange the table. What is given in the green circle are the adjectives. Délicieux, delicious. Végétarien, vegetarian. Salé, salted. Sucré, sugary. Sugary मतलब जिसके अंदर शक्कर ज़्यादा होती है वो. So now we are on page number 28. Autour de la table, around the table. Les trois amis indiens sont chez leur professeur. Monsieur Roux, depuis une demi-heure, Monsieur Roux annonce. So the three Indian friends are at their professor's place, Mr. Roux, since half an hour. Mr. Roux announces. So तीन इंडियन फ्रेंड्स कहाँ हैं? उनके प्रोफेसर के घर आए. They are in France right now and they are at one of their professor's place. Monsieur Roux, le dîner est prêt. À table mes amis. So Monsieur Roux कहते हैं the dinner is ready. Prêt, ready. At the table my friends. Maya. So Maya is an Indian girl. Quelle est belle la table et les fleurs aussi. How beautiful it is, the table and the flowers also. So Madame Roux मतलब Monsieur Roux and Madame Roux दोनों husband wife हो गए. Okay, Madame Roux, Maya, bien mettre la table est un élément essentiel dans un repas français. So bien mettre le couvert. Okay, mettre le couvert का मतलब है to lay the table. Okay, तो Madame Roux माया को बता रही है that to arrange the table is an essential element of a French meal. So table को बहुत अच्छे से arrange करना ये बहुत ही important element है एक French meal में. Neil is also an Indian student. Qu'est-ce qu'un repas français typique? Nous sommes curieux de savoir. So Neil कहता है what is it a typical French meal? Question mark. We are curious to know. हम बहुत curious है जानने के लिए कि what is exactly a typical French meal. Madame Roux. Bernard, tu veux leur expliquer? Je vais chauffer la soupe. So Madame Roux ने बताया वो अपने हस्बैंड को बोल रही है. हस्बैंड का नाम है बर्नार्ड. बर्नार्ड, can you या do you want to explain to them? Do you want to explain to them? I am going to heat the soup. मैं जाकर सूप गर्म कर रही हूँ. Can you explain to them what is a typical French meal? Okay. So Monsieur Roux. Oui, bien sûr. Yes, of course. Bien sûr, of course. Avant le repas, on sert des apéritifs. So before the meal, one serves appetizer. Appetizers मतलब drinks. Rohit. Rohit also is also an Indian student. Oui, nous venons d'en prendre. Yes, we have just taken some. Yes, we have just taken some. Nous prenons de prendre. So subject plus venir plus D plus infinitive. So this is passé récent. Yes, we have just taken some. अभी हमने just थोड़ा सा drink किया है. Monsieur Roux, c'est un moment agréable pour bavarder avec des amis. This is a pleasant moment in order to chit-chat with some friends. या for chit-chatting with some friends. जब भी फ्रेंच में pour plus infinitive होगा, pour plus full verb, तो उसको हम इंग्लिश में in order to बोल सकते हैं. So this is a pleasant moment in order to chit-chat with friends. On commence le repas avec une entrée. So one starts the meal with a starter. वाह वाह हमें पता ही नहीं था. Okay, so one starts the meal with a starter. हम सबसे पहले starters खाएंगे.
Aujourd'hui, today, Marie a préparé la soupe aux oignons. So today, Mary has prepared onion soup. Okay, onion soup. तो मैरी उनकी वाइफ का नाम है. तो लड़के का नाम, अंकल का नाम है बर्नार्ड एंड उनकी वाइफ का नाम है मारी और उनका सरनेम है ROUX, रू. सो मारी हैज प्रिपेयर्ड ऑनियन सूप. सो यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है मारी आ प्रेपारे, इट्स अ पासे कंपोजे, न्यू टेंस है जो हम ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. मदाम रू, ला सूप इज शॉर्ड, बोन एपेटाइट टू le monde. सो मदाम रू कह रही है दैट द सूप इज हॉट, हैप्पी मील एवरीवन. बोन एपेटाइट मतलब वो विश करते हैं लंच या डिनर स्टार्ट करने के पहले, हैप्पी मील टू le monde एवरीवन. इट्स वन वर्ड, टू le monde एवरीवन. रोहित, c'est délicieux, it is delicious. Ensuite, Madame Roux apporte les autres plats. Monsieur Roux sert des vins aux invités. So ensuite का मतलब है then, THEN, then Madame Roux brings the other dishes. मतलब सूप पीने के बाद Madame Roux ने बाकी सारे डिशेस भी लेकर आई टेबल पर. And Mr. Roux is serving some wines to the guest. वाओ, इमेजिन करो हम लोग लंच डिनर कर रहे हैं और मॉम हमारे लिए वाइन लेकर आ रही है. सो मिस्टर रू इज सर्विंग सम वाइन टू द गेस्ट्स. इनविटे मीन्स गेस्ट्स. नाउ कमिंग ऑन पेज नंबर 29, मदाम रू और कंटिन्यू le repas avec le plat principal. So one continues the meal with the main dish. Le plat principal, main dish. Voici le coq au vin. So here is le coq au vin. Students, you can see the image on the page 29 itself. Le coq au vin मतलब क्या होता है ना, it means थोड़ा मीट होता है, मीट एंड वेजिटेबल्स when you cook it in red wine और brandy. ओके, तो जैसे पाव भाजी का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता, वैसे ही फ्रेंच डिश का भी हम कोई इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकते. बट le coq au vin का मतलब क्या है, सब मीट एंड वेजिटेबल्स को हम कुक करेंगे इन रेड वाइन और ब्रांडी. दैट इज le coq au vin. Full stop. J'ai préparé une quiche aux légumes. I have prepared a quiche of legumes. So une quiche aux légumes का क्या मतलब होता है? बेसिकली एक पेस्ट्री जैसा होता है जिसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स डालते हैं. डेजर्ट वाला पेस्ट्री नहीं, बेसिकली जैसे चाट के अंदर हम नीचे कटोरी होता है तो वैसा ही कुछ होता है जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स डालते हैं और वो पूरा का पूरा खा जाता है. ओके, सो दैट इज quiche aux légumes. कार मीन्स बिकॉज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कार बिकॉज Bernard m'a dit que Neil est végétarien. So because Bernard told me that Neil is vegetarian. So Neil vegetarian है और स्पेशली उसके लिए मिसेस रू ने एक नई डिश बनाई है, दैट इज quiche aux légumes. Quiche aux légumes is a vegetarian dish. Full stop. Il y a aussi de la salade verte. There is also some green salad. There is also some green salad. Full stop. Neil, merci, c'est gentil. तो नील ने बोला थैंक यू, दैट्स काइंड ऑफ यू. Monsieur Roux apporte le plateau de fromage. Mr. Roux brings the dish of cheese. Monsieur Roux, maintenant vous allez goûter les fromages français. So what's the tense? Subject है plus conjugation of aller, vous allez goûter plus full verb, subject plus aller plus full verb, which means future proche. So now you are going to taste the French cheese. So Madame Roux, pour le dessert, j'ai préparé une tarte aux pommes. So Madame Roux बोल रही है for the dessert I have prepared une tarte aux pommes का मतलब होता है a pastry with slice of apples, मतलब apple pastry है. Okay, there is ice cream if you want some. Il y a de la glace si vous en voulez. There is ice cream if you want some. Full stop. Ira, d'habitude chez nous मतलब यूजुअली, d'habitude यूजुअली एट आवर प्लेस. एट आवर प्लेस मतलब अब इंडिया की बात चल रही है. इरा बता रही है कि हमारे यहाँ इंडिया में और सर टू ले प्लाट ensemble. वन सर्व्स ऑल द डिश टुगेदर, शुगरी एंड सॉल्टी. मतलब कोई भी डिश हो, सॉल्टेड हो या शुगरी हो, हम सारे के सारे डिश एक साथ में खाते हैं. बुराई कर रही इंडिया की, वेरी बैड. मदाम रू, मैं इसी बट यर ensuite en ordre. बट यर मतलब अब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं. मदाम रू फ्रांस की बात कर रही है, बट यर वन फॉलोज इन ऑर्डर. ऑन्ट्रे मतलब स्टार्टर्स, ल प्लाट प्रिंसिपल मतलब मेन डिश, ल फ्रोमाज मतलब चीज
और ल डेजर्ट मतलब डेजर्ट, मतलब मिसिस रू कितनी स्टाइल मार रही है कि फ्रांस में हम सब कुछ एकदम ऑर्डर में फॉलो करते हैं, स्टार्टर, मेन डिश, चीज एंड देन डेजर्ट. Et maintenant, le café pour terminer le repas. And now, the coffee in order to finish the meal. Pour terminer, pour plus infinitive in order to होता है. Généralement, c'est du café sans lait. Generally, it is some coffee without meal. It is some coffee without meal. Rohit. Quel repas délicieux. What a delicious meal. A grand merci à vous. A big thank you to you. Le repas du jour en France. The meal of the day in France. तो फ्रांस में 3 मील होते हैं. Le petit déjeuner मतलब ब्रेकफास्ट, सेकेंड le déjeuner मतलब लंच, और थर्ड le dîner मतलब डिनर. Souvent, on prend un croissant, du pain avec du beurre, de la confiture, du jus de fruits et du café. So, souvent का मतलब होता है often. One takes a croissant. Okay, croissant मतलब टोस्ट जैसा कुछ होता है. Some bread with butter, bread butter खाते हैं. Some jam, confiture मतलब जैम होता है, तो या तो ब्रेड को हम बटर के साथ या तो जैम के साथ खाते हैं. Some fruit juice and coffee. सो टोटल हम लोग टोस्ट जैसा कुछ खाते हैं, ब्रेड बटर खाते हैं, जैम बटर खाते हैं, फ्रूट जूस और कॉफी पीते हैं. ओके. Le déjeuner lunch, or prefer a déjeuner léger. One prefers a light déjeuner, light lunch. Okay, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे. Or prend a sandwich. One takes a sandwich. Du yogurt. Yogurt means curd. दही हो गया. De la salade avec une boisson. Some salad with a drink. So sandwich, dahi, salad और एक drink. And going with the last one, le dîner, on mange du poisson ou de la viande. One eats fish or meat. Okay? Fish तो बहुत क्यूट होती है इसलिए masculine noun है, और meat ओके होता है इसलिए वो है feminine noun. Des légumes मतलब vegetables, du fromage, cheese, et de la baguette. Baguette means long French bread. ओके. सो वो लोग क्या क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, वेजिटेबल्स, चीज और ब्रेड खाते हैं. Parfois, sometimes, on boit du vin. One drinks wine. Sometimes one drinks wine, rouge or blanc, red or white. Means there are two types of wine. Red wine भी होता है और white wine भी होता है. So sometimes they drink red wine and sometimes they drink white wine. Okay, students. So here we finish page number 29. Also, thank you so much.